हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए परीक्षित भावे। मैं आप सबका बैंक ऑडिट सीरीज में वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम देखने वाले कि कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है, कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑडिट करने के टाइम क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, कंटिंजेंट लायबिलिटी को किस तरह से एस्टिमेट करना चाहिए और उसको प्रोविजन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। सो कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब जो लायबिलिटी फ्यूचर में ऑकर हो सकती है और वो अनसर्टन इवेंट पे डिपेंड है। अगर कोई लाइबिलिटी एस्टिमेट हो चुकी है तो दैट वी विल प्रोवाइड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बट कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब जो लायबिलिटी फ्यूचर में आ सकती है डिपेंडिंग ऑन सर्टन सेट ऑफ फ्यूचर हैपनिंग। सो कंटिंजेंट लायबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ डिस्प्यूट और देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन द ऑडिटर्स। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑडिट करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑडिट करते हुए ये देखना है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी है या नहीं है। इज देयर एनी एग्जिस्टिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो उसे पूरी तरह से बताई गई है नहीं बताई गई है। देन कैन यू एस्टिमेट कि भाई कंटिंजेंट लायबिलिटी हो सकती है नहीं हो सकती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यूएशन। So audit point of view, these four things are very important. Whether contingent liability exists, then their provision is complete or not, contingent liability पूरी तरह से बताई गई है नहीं बताई गई, एक्यूरेसी कितने एक्यूरेटली आप एस्टिमेट कर सकते हो और उसका वैल्यूएशन किस तरह से कर रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। सो एलएफआर बैंक ऑडिट में क्वेश्चन पूछा गया है आपको। पार्ट 3 डिपॉजिट्स और लायबिलिटीज में पार्ट 3 में बताया कि कंटिंजेंट लायबिलिटी लिस्ट मेजर आइटम्स ऑफ द कंटिंजेंट लायबिलिटी अदर देन बैंक गारंटी एंड एलसी नॉट एक्नॉलेज एज अ ब्रांच। मीनिंग दैट ऐसी कोई लायबिलिटी है क्या ब्रांच में एग्जिस्टेंस में जो लायबिलिटी कंटिंजेंट नेचर की है पर बैंक ने उसे प्रोवाइड नहीं किया गया। नाउ आई एम गिविंग सर्टेन एग्जांपल्स टू यू। सपोज देयर इज अ डिस्प्यूट ऑफ रेंट विद द लैंडलॉर्ड। अगर आपकी ब्रांच प्रीमाइसेस रेंटेड है और देयर इज अ डिस्प्यूट गोइंग ऑन बिटवीन द ब्रांच एंड लैंडलॉर्ड, the landlord is asking for a additional rent, the branch is not agreed to pay, so that amount will go to contingent liability. Coming to the further example, suppose branch is paying 10 lakh rupees as a rent as of date, and if the landlord is asking 15 lakh rupees, so there is a dispute going on between 10 lakhs to 15 lakh rupees. So this 5 lakh is a contingent liability, and bank should provide by way of footnote in the contingent liability of 5 lakh. Suppose if you can estimate this liability, for example, how much amount to be provided for. If the management has agreed that they are ready to pay the 13 lakh rupees rent. So earlier rent was 10 lakh rupees. Now management has agreed to pay 13 lakh rupees, but landlord is asking 15 lakh rupees. So 3 lakh rupees amount is estimated. So bank management has agreed 3 lakh rupees. So in the books of account, we need to provide this 3 lakh rupees. While on the other hand, this 2 lakh rupees to be provided as a contingent liability. Another examples we can cite out as if there is a dispute going on, taxes dispute, these points can be given to the company and other also. If there is a tax dispute is going on, the authorities has demanded the taxes, but as of date, the party has not paid the taxes. So these taxes has to be provided by way of contingent liability. Now here we have to see that whether it is probable, possible. अगर वो probability है आपकी तो आपको contingent liability बोल के बताना है उसे। Another example we can cite is that if there is a lawsuit going on and the bank is a party to that particular lawsuit. Coming to the another example, if the any party, any aggrieved party had made a lawsuit against the bank claiming certain amount of compensation, then we need to see that whether that particular liability is shown as contingent or not. Now the next question is how to audit this contingent liability. सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि how to audit this contingent liability. The first answer will be ask the management that whether they think that whether there is any contingent liability as on 31st March 23. If they think that there is a contingent liability, ask for the statement. Ask for a similar statement as on 31st March 22. Now compare both the statement 31st March 22 versus 31st March 23.
If both are the same one, so there are the contingent liability which are going as on 31st March 22 also, and as on same date they are continuing. If there are some new addition, that also need to be seen. If certain contingent liability was shown in the 22 statement but not of as of date, so that are the discontinued, that also need to be seen. Now overall we need to see all the contingent liability as on 22 as well as 23. If there is a contingent liability on 22, how it is settled, whether the provision is made or whether that liability is coming in our favor. Now the question arises that how to review these liabilities. So the best option for to review this liability, see the correspondence files of the bank, see that the lawsuits, आपका correspondent जो advocate के साथ में चल रहा है, what are the submissions, whether there are any results or interim results have been declared by the courts. So see all the files. Now you have to review that whether it is a probable, possible, and remote. If it is a probable and it can be estimated, so it should be provided in the books of account. If it is a possible but cannot be estimated, so it should be shown as a footnote to the books of account, that is as a contingent liability. And if it is a remote, and if it is not having any material impact on the financial statements, so the company or the bank may ignore that liability. So overall, in nutshell, we have to see that whether the contingent liability exists, it is properly estimated, review all the documents with the bank, correspondence with the advocates, also see that the subsequent event, use your professional judgment, whether it can be provided in the books of account or it has to be shown as a contingent liability. If it is not material, you may ignore that contingent liability. So friends, that's all for overall for the contingent liabilities. Thank you.